A very good morning, ladies and gentlemen. My name is Bini Advani, and it gives me immense pleasure to welcome each one of you on behalf of Odisha Bhaskar to the Voice Conclave of Ideas. Odisha Bhaskar, one of the leading dailies of the state, has been a beacon of information and a voice of human interest stories since its inception in 2004. Born from the visionary dreams of its founder and managing director, Mr. Madhu Mohanty, the newspaper has blossomed into a trusted name, proudly commanding a readership of over 2 lakh loyal readers each day. Its unwavering commitment to truth and excellence has earned its recognition from both the state government and the union government. Carrying forward its legacy of empowerment and enlightenment, Odisha Bhaskar presents the Voice Conclave, a prestigious flagship event that brings together luminaries and thought leaders from diverse industries. This platform is dedicated to the sharing of knowledge, the exchange of experience, and the nurturing of the next generation of entrepreneurs. By guiding and inspiring young minds, the Voice Conclave seeks to ignite a new era of innovation, vision, and industry insight. Today, we have with us very eminent speakers lined up throughout the day, like senior journalist Mr. Rajdeep Sardesai, founder Boat Aman Gupta, CEO Swiggy, Rohit Kapoor, award-winning actor Tiska Chopra, and spiritual guru Aniruddhacharya Maharaj, to name a few. We kindly request you to relax and engage with the session as we embark on this enriching journey together. Ladies and gentlemen, we would now like to invite our dignitaries on stage. We first begin. Please let's have a huge round of applause as we invite on stage Srimati Surma Padi, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, to kindly join us on the dais. We also have joining her Shri Prithviraj Harichandan, Honorable Minister of Law, Works and Excise. Let's have a huge round of applause. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause as we invite on stage Shri Rahul Devji, Senior Journalist, to join us on the dais as well. Joining them on the dais, we have with us Ms. Ruby Sinha, President BRIC CCI Women's Wing. Let's have a huge round of applause for Ms. Sinha. We also have with us Dr. Tapan Chand, ex-CMD NALCO, joining us on stage. Let's have a huge round of applause as we welcome him on stage. And joining them on the dais, we have with us Shri Tilak Raj Mohanty, founder, TK Digital. Let's have a huge round of applause for him. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause once again for all our dignitaries. Before we begin today, in the light of the unfortunate incident that has happened in Pahalgam, I would like to request all of you to kindly stand up so that we can have 1 minute silent prayer for all those who have lost their life in this unfortunate incident while they were enjoying with their loved ones.
Thank you, ladies and gentlemen. Now we would like to inaugurate the Voice Conclave of India with the auspicious lighting of the lamp. May I please request our dignitaries to kindly do the honors? शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च Ladies and gentlemen, we would also like to inform you that our consulting editor, Rajdeep Sardesai, he would be joining the media sessions as one of the key panelists of the media session. He will also be the chief guest of the valedictory session. He'll be joining us very soon. Before we proceed ahead, we have a very warm message from Honorable Union Minister of Education, Dharmendra Pradhanji. Son of Odisha and a statesman of national stature, Shri Pradhanji has been a pillar of leadership, policy innovation on and people-centric governance. During his remarkable tenure as Union Minister of Petroleum and Natural Gas and later as a Minister for Skill Development, he redefined India's energy diplomacy and launched historic initiatives like Ujjwala Yojana that transformed life at the grassroots. As the Minister for Skill Development, he laid a robust foundation to empower India's youth and create a future-ready workforce. Ladies and gentlemen, we have a video message from him. Can we please have the AV? द वॉइस कॉन्क्लेव ऑफ आइडियाज कार्यक्रम रे उपस्थित ओडिशा विधानसभा मान्यवर बाचस्पति आदरणीय श्रीमती सुरमा पाड़ी महोदया ओडिशा सरकार वरिष्ठ मंत्री पूर्त आईन और अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन महाशय भारतर संसदर स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव परामर्शदाता श्री राहुल देव महाशय इंडिया टुडे ग्रुप कन्सल्टिंग एडिटर तथा देशर ख्यातनाम एंकर राजदीप सरदेसाई महाशय ब्रिक्स सीसीआई वुमेन्स विंगर प्रेसिडेंट रूबी सिन्हा महाशय नेल्कोर पूर्वतन सीएमडी डॉक्टर तपन कुमार चांद महाशय टीके डिजिटल प्रतिष्ठाता तिलकराज महांती महाशय तथा उपस्थित सांबादिक बंधु व्यक्तिविशेष और भाई भौणी माने प्रथमे मु ओडिशा भास्कर एवं आपण मानक पाखरे क्षमा प्रार्थी आज जो कॉन्क्लेव होउची एते प्रत्यक्ष भाव जोड़ी हेबा पई मोर बहुत आग्रह थिला मोर बंधु श्रीयुत मधु महांती महाशय जेतेबेले मते एही कार्यक्रम रे जोग देबा पई निमंत्रण देबा को आसीथिले सेतेबेले मु बहुत खुशी होइतिली एवं एही कार्यक्रम रे शामिल हेबे बोली स्वीकृति देइथिली तेबे दुखर विषय ईश्वर पूर्वतन अध्यक्ष तथा जातीय शिक्षा नीति 2020 रो प्रणेता पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को वियोग होइछि मते आजी तांको अंत्येष्टि जोग देबा पई बेंगलुरु रे रहबा पई पडुछि यही कारण पाई मु आज आपणक गहन रे उपस्थित होई पारु नाही जेउ कारणरू मु बहुत दुखित बंधुगण ओडिशार गणमाध्यम विशेष करके डिजिटल गणमाध्यम क्षेत्र में ओडिशा भास्कर एक परिचित नाम आज यही अनुष्ठान पक्षर आयोजित कार्यक्रम शीर्षक रही द वॉइस कॉन्क्लेव ऑफ आइडियाज यह एक स्वागत योग्य कार्यक्रम गोटे विषय रे तर्क वितर्क कले ही समाधान सूत्र बाहर यही साधु उद्यम पाई मु आदरणीय श्री मधुबाबू भास्कर टीम तथा आज कॉन्क्लेव सह जड़ित समस्त शुभेच्छा और धन्यवाद जनाऊँगी
ଏହି କନକ୍ଲେଭ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ଥିବା ଅପାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମାପ ଜଙ୍ଗଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ଅମାପ ଜଳ ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବୈଭବର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୌଦ୍ଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, NIT ରାଉରକେଲା, IIM ସମ୍ବଲପୁର, ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନାଇଜର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, CPET, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଭଳି ବିଶ୍ୱମାନର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆଜିର କନକ୍ଲେଭ ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ଦେଶରେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସକୁ ଶାସନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଆମ ସରକାରରେ ଗରିବ, ଅସହାୟ, ମହିଳା, କୃଷକ ତଥା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷରେ, ଧାନର ଇମ୍ପୁଟ୍ ସବସିଡି ତଥା MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଧୀନରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନରେ ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ, ଜଳପଥ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତଥା ଗମନାଗମନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବ୍ୟୟ ହାର ବଢ଼ିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍, AI, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଟୋମେସନ୍ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିକଶିତ ନ ହେଲେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2047 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶ $30 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିୟନ୍ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ହିଁ ସଠିକ ସମୟ, ଏହି ସମୟ ଭାରତର ସମୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଉଦ୍ୟୋଗ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରେଣୀ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଆଧୁନିକତା ଓ ପ୍ରଗତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବା। ପରିଶେଷରେ କହିବି, ଦ ଭଏସ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ହେବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Due to unfortunate circumstances, he was not able to be with us today, but we would like to thank him for that wonderful message and gracing us with his presence. We would now like to take this opportunity to welcome Kaustav Das, editor and CEO, Odisha Bhaskar, to kindly join us on stage and give a welcome address to each one of you. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause as we welcome him. Namaskar, Jai Jagannath. Good morning,
ladies and gentlemen, respected dignitaries on the dais, esteemed guests, friends, and dear participants. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all to the Voice Conclave of Ideas, a platform dedicated to echoes of truth, media as the voice of change. At the very outset, let me bow my head and express deep sorrow over the tragic incident at Pahalgam. As we gather here to celebrate ideas and dialogue, we stand in solidarity with the families of those who lost their lives. Let's always remember the spirit of humanity must prevail over hatred and violence. We had eagerly awaited the gracious presence of Sri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister for Education, whose inspiring leadership continues to light the path of knowledge and empowerment for our nation. Unfortunately, due to some unavoidable circumstances, he couldn't be present among us today. However, we are honored to have received his kind video message. Today, we are blessed to have an eminent gathering over here. Madam Surama Padi, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, the inaugurator of this conclave, a distinguished leader who has consistently upheld the dignity and democratic spirit of Odisha's legislative process. I would like to welcome Sri Prithviraj Harichandan ji, Honorable Minister for Law, Works and Excise. Sir is a dynamic policymaker known for his commitment to strengthening legal frameworks and driving developmental process. Sri Rahul Devji, the senior journalist and unwavering voice in journalism, whose work continues to inspire transparency, truth, fearless, and storytelling. I welcome you, sir. I welcome Ms. Ruby Sinha, the President, BRICS CCI Women's Wing, a champion of women entrepreneurship who continues to open new frontiers for women across the global economy landscape. I also welcome Dr. Tapan Kumar Chand, former CMD NALCO, a stalwart whose vision has transformed the landscape of India's mining and metal sector with a legacy of sustainable industrial growth. Sri Tilakraj Mahanti is the founder of TK Digital, a pioneering force whose innovation is digital communication, is setting new benchmark for the next generation. I take this moment to also pay heartfelt respect to our chief editor and veteran journalist, Sri Pradosh Patnaik ji, a pillar of Odisha Bhaskar. His editorial leadership and relentless pursuit of truth continue to shape our identity as a newspaper committed to the people, by the people, and for the people. And none of this would have been possible without the blessing and vision of our founder, Sri Madhu Mahanti ji, a towering personality and a visionary leader. He dared to dream when few believed. His dream was simple yet profound, to create a media voice that stands tall for Odisha, by empowering it with credible journalism, fearless reporting, and positive change. Dear friends, as we inaugurate today's conclave, let's reaffirm our collective responsibility to use media not just as a mirror of society, but as a lighthouse for change. A change rooted in truth, compassion, and courage. Let the voice be not just a conclave, but a movement where ideas lead to action and action leads to a better tomorrow. Once again, I warmly welcome all of you and look forward to an enlightening day ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
Thank you, Mr. Das. We also have with us Aman Gupta, founder and CMO of Boat. We would request him to kindly join us on stage on the dais. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. We would now like to invite Shri Tilak Raj Mohanty, founder of TK Digital, to kindly give an address. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for him. Hello. Namaskar and a very good morning to everyone. On behalf of Odisha Bhaskar, I extend a warm and heartfelt welcome to all our esteemed guests, dignitaries, speakers, and participants who have joined us today for this special gathering, The Voice, the Conclave of Ideas. It gives us immense pleasure to welcome you all to this very special gathering, The Voice, the Conclave of Ideas, proudly presented by Odisha Bhaskar Live. We are joined today by a truly inspiring panel of dignitaries, and it is my honor to acknowledge their presence. Srimati Surma Padi, Honorable Speaker, Shri Prithviraj Harichandan, Minister of Law, Odisha, Ms. Ruby Sinha, President of the BRICS CCI Women's Wing, Shri Rahul Dev, Senior Journalist, Dr. Tapan K. Chand, former CMD of NALCO, and Shri Aman Gupta, co-founder and CMO, Boat. We are deeply honored by your presence and your commitment of shaping the conversations that matter. This conclave is more than just an event. It is a celebration of ideas, innovation, and Odisha's incredible spirit of transformation. And at the heart of this transformation stands Odisha Bhaskar. Many of you know Odisha Bhaskar as one of the leading Odia daily today, but let me take you a few years back to a moment that truly changed everything for us. Odisha Bhaskar began its journey in the year 2004 by the ideation of our founder and managing director, Mr. Madhusudhan Mohanty, as a humble newspaper. With a small but dedicated partnership, for many years, we were focused on print, committed to bringing news to households across Odisha the traditional way. Then came 2022. The pandemic hit. The world stopped, and so did the distribution of newspapers. As someone who had grown up around media, but also deeply rooted in the digital space, I saw not just a challenge, but an opportunity. A gap between what people needed and what was available. People needed news, not tomorrow morning, but right now. They needed a platform that was fast, trusted, local, live, and most importantly, easily available. That's when the idea of Odisha Bhaskar Live was born. We didn't have much, just a vision and the belief that Odisha deserved a powerful digital voice of its own. And with the support of our incredible team and the people of Odisha, we launched Odisha Bhaskar Live, a 24/7 digital platform designed to bridge the gap between satellite media and the traditional newspaper. Today, I am proud to say that Odisha Bhaskar Live is the #1 digital channel platform in the state with more than 5.3 million subscribers with YouTube and Facebook combined, and with a daily views of 11.2 million, reaching Odias not just in every corner of the state, but across the globe. Let's not forget one of the most meaningful parts of our journey, which has been our heartfelt initiative, Ma Tujhe Salam.
Since 2010, the program has honored the martyrs of Odisha and supported the education of their children, touching the lives of over 180 families. Today, as we reflect on the theme, Echoes of Truth, Media as the Voice of Change, we must ask ourselves, in the world full of noise, media must be the voice of clarity. In times of conflict, it must be the voice of reason. And in moments of uncertainty, it must be the voice of truth. Let's remember, media is not just about breaking news. It's about breaking barriers. It's about questioning, understanding, and most importantly, standing with the people. And that is what the inception of Odisha Bhaskar has been since 2004 for the people. As the voice, the conclave of idea begins, I invite you all not just to listen, but to speak, to share, and to believe in the power of ideas. Because remember, every idea has a voice. And we bring them together today and to create something far better, more than just a conversation. We are here to create transformation. In the end, to all our dignitaries, speakers, guests, and participants, thank you for being a part of this journey. Thank you for being the part of the first edition of The Voice, the Conclave of Ideas. Dhanyavad, Jai Hind. Thank you so much, Mr. Mohanty. Ladies and gentlemen, we would also like to inform you that we have in our midst Mr. Anirudh Acharya with us. So please let's have a huge round of applause for him. Thank you so much for gracing us. With this, we would now like to invite Dr. Tapan K. Chand, ex-CMD NALCO, to kindly give his address. Ladies and gentlemen, presenting to you Mr. Chand. Let's have a huge round of applause for him. सर्वप्रथमे मु आमर आराध्य देवता आमर संस्कृति और अस्मितार प्रतीक श्री श्री जगन्नाथ को कोटि प्रणाम करुछि आशीर्वाद भिक्षा करुछि तांकर आपण समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मंचरे उपस्थित आजिर मुख्य अतिथि मान्यवर विचारपति मान्यवर बाचस्पति श्रीमती पाढ़ी मान्यवर मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन विशिष्ट पत्रकार राहुल देव जी मोनिका जी रूबी जी अमन गुप्ता जी उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार प्रदोष जी मधु जी आ समस्त विशिष्ट व्यक्ति मीडिया रा प्रतिनिधि पत्रकार बंधु माने प्रोफेशनल्स भाई और भौणी माने अनेक पत्रकार बंधु बाहर राज्य आसचंती तेणु सेमानक सुविधा पाई आ समस्त मो मोर वक्तव्य ओडिया तथा अंग्रेजी उत्थापन करी I welcome all the delegates who have come to this conclave, to this temple city of Bhubaneswar, and ideas of the conclave. I compliment the management of Odisha Bhaskar to organize a conclave on this contemporary subject. Mr. Tilak Raj and Mr. Kastuba,
their combine is very dynamic and they are making waves in the media. And now they are generating waves of ideas. If you ask what is the significant development in the contemporary time, then the answer is rise of ideas. If you have a brilliant idea, you can make $1 billion of business empire. Capital as an entry barrier is no more there. And if you see another trend globally, that for the last more than 10 years, global economy has been going on in a sluggish way. Sometimes it is slipping into recession, again reviving little, but still remaining in sluggishness. But one good news is, India has remained as a bright spot in the gloomy global economy. India has phenomenal achievement, sometimes make others to wonder. There are many factors for which this has happened. But one of the things that I feel, that for the last 10 years or more, we have been continuously warming up the economy by various new ideas, programs like Make in India, Digital India, Startup India, so many programs, Gati Shakti, many more. Because as you go on doing various economic activities, you pep up the economy to revive. In fact, a huge compliments to our Honorable Prime Minister, whose innovative ideas has been transforming India. Being a developing nation, still it has made a mark in the global economy by remaining brilliant despite gloom environment. At the same time, a very grand idea has come, never before, that India will become a developed country. Odisha will become a developed state. Viksit Bharat, Viksit Odisha. These are not dreams or these are not wish list, because these are all highly actionable programs with time-bound timelines. Viksit Bharat by 2047, Viksit Odisha by 2036. Again, the envisioning that Odisha will be a leading state in the journey towards Viksit Bharat, and Odisha will be the growth engine, is once again not a wish list. Because if you see the timeline, see that India is becoming Viksit Bharat by 2047, a decade before. That is 2036, Odisha is becoming Viksit. Therefore, it is but natural that a developed state will definitely be leading the journey for the development of the country. Now, a question comes, how come this will happen? That how Odisha will become a developed state? Because if you see the present position and the future as a developed state, then it is not a gap, but it is a gulf. From the existing level of economy, size of the economy is around 120 billion. From 120 billion, it has to go to 500 billion. And in 2047, it is to 1500 billion. See the 5 times increase. If you see the past growth of state GDP, then you will see that it has grown maximum 3 times. So therefore, the challenge is very steep, because from 300,
it has to get more, another $200 billion to become a developed state. Similarly, if you see for the common people, per capita income is very relevant. Because you may be a developed state, but what happens to the common people? Are they developed? That means have they developed in their economy by making more income? So the estimate is 6 to 7 times increase in the per capita income. That is also a great thing. Similarly, if you see in the agriculture, there also right now, Odisha's position is very low. It is average income is less than the national average even. So therefore, development in the agriculture, there also it has a challenge. In budget, MSME has been identified as a growth engine of the country as well as the state. If you see in the MSME numbers of MSMEs, then you will see Odisha is nowhere in the first 10. So there also it is a big challenge. Therefore, this challenge to be met, that how to go, there must be something, some new thing which has happened, which will fire the journey towards developed state. In my opinion, Odia Hospital will be the powerhouse to drive this journey. Because as you know, you may have everything, because you know that Odisha is full of natural resources, full of all kinds of resources. But what matters is the mindset, and the mindset comes out of hospital, or the esteem, self-esteem. It has been seen in the history that country, nation, and society, everything will be remaining same. But once they start realizing their own esteem, they start developing and growing. So I hope that Odia Asmita, which has very rightly been echoed by many of the leaders, more particularly my thanks to Honorable Union Education Minister, Mr. Dharmendra Pradhan, who first raised this Odia Asmita, and not only that, he made it a household subject for discussion. So that type of a self-esteem realization has come in Odisha, and I hope that will fire the journey. Then Odisha, as a Biksit Odisha, is not only Biksit in industry or manufacturing, it should be Biksit in agriculture, education, health, infrastructure, logistics, tourism, everywhere, all the comprehensive development. Just I will examine two parameters, that where we are and whether we can achieve it or it will remain as a wish list. Major parameter of a developed economy is its GDP and per capita income. If you see, we are at the level of, right now we are at the level of $120 billion. Last 1 year, we have increased from 100 billion to 120. That means we have added 20 billion per year. If you calculate that thing, the next, we have to achieve 500, that is 236. That means 10 to 11 years are left out. Then we can make 200 or 220 addition. That means at 330 will remain unless we start taking out of the box thinking or the new model of the development. Many people say that when you do a thing, you follow the benchmarking. That here if you go through the benchmarking, the developed states like Maharashtra, whose GDP is ranked number 1, they stand as one of the model. But in my opinion, we should follow our own model, because Maharashtra situation is not compared with the state of Odisha, because in Odisha, we have an agriculture-based economy, because 83% of the people, they remain in rural areas. Around 51,000, more than 51,000, precisely speaking 51,349 villages are there, whereas in Maharashtra,
with 12 crore people, 41,000 villages are there. 50% people are staying in the urban area. So the situation is not comparable. Therefore, we should have our own model. And in that model, as you know, that to make 200 billion more revenue, you need some new avenues, new areas. If we take the agriculture, agriculture has to be a profitable occupation for the farmers in Viksit Odisha, because up to now, agriculture has remained as a sustenance living. It is never a profitable business, but it has to become, for which productivity in the agriculture, high yield variety, all kinds of applications are to be there, even combining agro industries, then only that can become a profitable thing. But agriculture as such, contribution is 20. Right now, if you see 20% it offers to the state GDP with a rate of growth of 2 to 3. So maximum 1 or 2% you can get from there. So it will not be enough to take you to that level of $500 billion. Then comes the service sector. Service sector contributes 36% to the state GDP with a growth rate of 10 to 11%. It has some hope, and more particularly in tourism, if it is tapped maximum, there will be a lot of revenue coming from there. A lot of engagements will also be there. But focusing thing remains in the manufacturing and the industry, where till now in Odisha, people say that Odisha is a rich land because endowment, natural endowment is there. Everything, jami, jala, jungle, janasampad, sabu jinso achi. Kintu, because this, how much revenue we are able to realize, right now, Odisha is at only the first stage of value realization. There is a need, the second, third, and fourth stage of value realization has to be there. And I will just give you a small example that how the hidden revenue is there. Odisha is number 1 in bauxite. If you take 1 ton of bauxite, if you sell, then it will be around $50. If it is made alumina, it becomes 250, 5 times increase. If it becomes aluminum, it is 2,500, that is 100 times. If it becomes high-end aluminum, it is $10,000, that is 200 times. Look at the type of revenue that is hidden. So my suggestion will be that we should go more for the, while spreading the base of more industrialization, we should go for more value addition. Then we are in a position to cultivate the amount of revenue which is required. And Odisha, I am sure, the type of mindset now is put and the type of the government initiatives which are getting taken, Odisha is definitely going to achieve that target of $500 billion. And also, Odisha will be achieving a comprehensive achievement in all the sectors like agriculture, health, education, infrastructure, logistics, and everything. So there will be a comprehensive Viksit Odisha where the common man will feel that, okay, I have really got developed. Thanks to all of you. Thank you so much, Richand ji. We would now like to request Shri Rahul Dev ji to kindly come on the dais and say a few words. Let's have a huge round of applause. So please, can we just have a few words, please? Thank you. माननीय सुरमा जी, पृथ्वीराज जी, तपन जी, रूबी जी, तिलक जी और अमन जी और दोस्तों, मैंने अपने बड़े भाई प्रदोष जी से पूछा कि मैं किस भाषा में बोलूं, हिंदी में बोलूं कि अंग्रेज़ी में बोलूं, क्योंकि यहाँ पे सब अंग्रेज़ी में हो रहा है। अनुरुद्ध जी, आपको भी एक समस्या, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अंग्रेज़ी आती नहीं, टूटी फूटी आती है।
तो उन्होंने मेरी जान बचा ली और कहा कि आप हिंदी में बोलिए। तो अच्छा होता कि मुझे उड़िया आती, क्योंकि उड़ीसा मुझे बहुत प्रिय है और वहाँ के लोग और हर चीज़ बहुत प्रिय है। 40 साल पुराना मेरा लगाव है इस प्रदेश से। मैं सबसे पहले तो इस समूह को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने अहम विषय पर इतने अहम बड़े महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर एक ये कॉन्क्लेव उन्होंने की, पहली बार किया। ये एक विचारों का संगम है, एक यज्ञ है जिसमें सब अपने अपने विचारों की हम आहुति देंगे और उससे जो भी निकलेगा वो बहुत शुभ होगा, देश के लिए, हम सब के लिए और उड़ीसा के लिए, ओडिशा के लिए, क्षमा। दूसरी बधाई मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि जो विषय रखा है वो बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। इकोज ऑफ ट्रुथ, मीडिया द वॉइस ऑफ चेंज। तो सत्य तो एक होता है, ट्रुथ इज वन, बट इट हैज सेवरल इकोज। And truth is not alone, never alone. There is always untruth coming right behind or alongside truth. यानी सत्य अकेले नहीं आता, उसके साथ असत्य और अर्धसत्य भी चलते हैं आगे पीछे। और जैसे सत्य की गूंज होती है, वैसे ही असत्य और अर्धसत्यों की भी गूंज होती है। तो सत्य हो, अर्धसत्य हो या असत्य हो, उनको उनके स्रोत से, सोर्स से हम तक, समाज तक, लोगों तक पहुंचाने का काम जो माध्यम करता है वो मीडिया है। मीडिया का तो शाब्दिक अर्थ ही माध्यम है, मीडियम का बहुवचन है। अगर कोई एक अटल नियम है पृथ्वी का, जीवन का, वो परिवर्तन है, ये हमने सुना है, और शायद इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक शायद ब्रह्म को छोड़कर, जो बदल नहीं रहा है। ये पृथ्वी बदल रही है। जो पहाड़ हमें, हिमालय सहित जो पहाड़ हमें इतने बड़े, अटल, इतने विशाल दिखाई देते हैं, वो भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। प्लेट्स जिनके ऊपर ये देश और हमारे भूखंड आधारित हैं, वो भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, जिनको हम टेक्टोनिक शिफ्ट्स कहते हैं। मनुष्य बदल रहे हैं, हमारी देह हर पल बदल रही है, हमारा मन, हमारी चेतना हर पल बदल रही है। तो परिवर्तन तो अटल है, और परिवर्तन इतने ज़रूरी हैं, इस तरह के हैं कि जिनको अगर हम जीवन में, अपने आसपास, अपनी दुनिया में, देश में, अपने शहर में हो रहे परिवर्तनों को न जाने तो हम शायद एक दिन भी जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो परिवर्तन तो होते ही रहेंगे, हम तक उनकी खबर पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन अगर हम तक नहीं पहुँचेगी और हम उनसे अनभिज्ञ रह गए, यानी हमको पता नहीं चला, तो शायद नुकसान हमारा होगा, परिवर्तन का नहीं होगा। ज्ञान में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, नया ज्ञान निर्मित किया जा रहा है, और नया अज्ञान भी निर्मित किया जा रहा है। मैं अभी उस पर बाद में दूसरे सत्र में आऊँगा। तो जो बदल रहा है उसकी सूचना हम तक पहुँचना हमारे अपने जीवन के लिए अनिवार्य है। जो अच्छे परिवर्तन हैं वो भी, या जो तथाकथित अच्छे हैं या जो तथाकथित बुरे परिवर्तन हैं, उन सब को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। और ये काम मीडिया करता है। एक समय था जब ये आधुनिक मीडिया नहीं था, जब अखबार नहीं थे, रेडियो भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, विज्ञान अपनी बिल्कुल आरंभिक आदिम अवस्थाओं में था, तो भी राज्य की ज़रूरत थी कि वो सूचनाएं, राजा ने क्या फैसला किया, ये सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए हरकारों का इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप में उनको टाउन क्रायर्स कहते थे। वो जाके ऊंचा बोल बोल के लोगों को खबरें, सूचनाएं देते थे। और तो सूचनाओं का आदान प्रदान भी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर पर लोकतंत्रों में। तो सूचना और सही सूचना, ये
हमारे एक निजी एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, नागरिक के रूप में और देशों, प्रदेशों, ज़िलों के लिए भी और संसार के लिए भी हर महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना पहुंचना ज़रूरी है। पहले एक सूचना को एक से दूसरी जगह पहुंचने में इस पर निर्भर करता है कि दूरी कितनी थी, महीनों लग जाते थे। अब एक सेकंड से भी नहीं लगता। तो परिवर्तन की गति और सूचना की गति बहुत तेज़ी से बदली है, लगातार बदल रही है वो भी। अब समस्या ये हो गई है कि हम इतना ज़्यादा सूचनाओं का विस्फोट है कि क्या सत्य है, क्या अर्धसत्य है, जिसे सत्य की गूंज कहा गया, गूंजें, इकोस ऑफ ट्रुथ। हम मनुष्य का मस्तिष्क इस समय उससे इतना आप्लावित है कि वो तय नहीं कर पा रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि क्या सच है, क्या गलत है, मैं किसको सच मानूं, किसको ना मानूं। तो ये सूचना देते हुए उसको संदर्भ देना, परिप्रेक्ष्य देना भी मीडिया का काम है, क्योंकि अगर संदर्भ और परिप्रेक्ष्य हमें नहीं मिलेगा तो सूचना, अकेली सूचना हमारे किसी काम की नहीं है। हर सूचना का मतलब क्या है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, देशों पर, प्रदेशों पर, चाहे वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, विज्ञान का, ज्ञान का। पुस्तक भी एक मीडिया है। नया ज्ञान आता है तो पुस्तकों में आता है। यहाँ पे बहुत से विज्ञान से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। हम जानते हैं कि साइंटिफिक जर्नल्स अगर ना हो तो विज्ञान के लोगों तक, छात्रों तक और टेक्नोलॉजिस्ट के पास सही सूचनाएं जो नई खोजें हो रही वो नहीं पहुँचेगी। तो ये भी जर्नल्स भी मीडिया, फिल्में भी एक मीडिया। लेकिन मित्रों, ये और हर परिवर्तन, हर चीज़ बदलता है और हर सूचना हमारी चेतना बदलती है, सूक्ष्म तरीके से या स्थूल तरीके से। हम कई बार अपनी ही चेतना में हो रहे परिवर्तनों को पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो बहुत महीन परिवर्तन होते हैं। लेकिन ज्ञान की और सूचना की एक प्रकृति है, विशेषता है कि एक बार हमने जिस चीज़ को जान लिया, वो सच है या झूठ, उसके बाद हम वो नहीं रहते जो उससे पहले थे। तो इसलिए आज के युग में जब सत्य, असत्य और अर्धसत्य लगातार उत्पादक कारखानों में बनाकर बांटे जा रहे हैं, हम तक भेजे जा रहे हैं, हमारे ऊपर उनका हमला किया जा रहा है हर तरफ से, उस समय वो विवेक, चाहे वो एक सामूहिक विवेक हो या व्यक्तिगत विवेक हो, जो हमें बताए कि हम किसको सच माने और उसके आधार पर व्यवहार करें और किसको ना करें, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना न तो देश का काम चलता है, न संसार का और न हमारा। और मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसे एक माध्यम का, मीडिया का एक छोटा सा सदस्य हूँ। और आज हम कोशिश करेंगे कि परिवर्तनों की और परिवर्तनों की सूचनाओं की थोड़ी बात करें और समझें कि परिवर्तन और उनके साथ साथ सही सूचना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Rahul Dev ji. May I now request Ms. Ruby Sinha ji to kindly say a few words. Thank you. Namaskar. It is indeed my great privilege to be here today at this prestigious Voice Conclave of Ideas hosted by Odisha's leading digital platform, Odisha Bhaskar Live. My sincere greetings to the eminent dignitaries on the dais and a distinguished audience. In fact, my connection with the state of Odisha goes back to my days in Kolkata, where I was born and brought up and also started my career as a journalist. For us, Odisha stood for its ancient temples, scenic beauty, lovely beaches, amazing wildlife, artistic talent. But as we grew up, Odisha also came to stand for its missile testing facility in Chandipur, its academic institutions, its efforts to create a green economy. The state is today fast becoming a leader in IT. Even entrepreneurship is growing significantly. It's becoming a manufacturing hub and semiconductor innovation hub also, completely aligning with India's push to become a global digital superpower.
In fact, I was recently reading that 8 brilliant scientists from Odisha had just won the 2025 Breakthrough Prize in Fundamental Physics at CERN, often called the Oscars of Science. But what made it extra special for me was that the list of 8 included the names of 3 women scientists, which is a proud feeling for me as a woman. In fact, Odisha's rich and vibrant culture has nurtured remarkable women who have today been the torchbearers of their communities. We have one such woman sitting here on the dais, but the state has also produced many women entrepreneurs, a staggering 14 lakh Lakpati Didis, a number that by 2027 is estimated to touch 25 lakh. I don't need to list the impressive women who have been born in the state, right from the great literature Annapurna Devi to Her Excellency our Honorable President Srimati Draupadi Murmu. In fact, we at BRICS CCI Women Empowerment Vertical have also felicitated Odisha's millet queen Srimati Raimati Guria as our trailblazer women icon last year at our annual Women's Summit. The visionary state government has reflected a broader commitment to women empowerment and also introduced several game-changing schemes like the Subhadra scheme. However, women cannot just be seen as recipients of state largesse. They must be seen as being at the forefront of economic growth. A seat at the high table of gender equality and equal opportunity is not a gift, it is a right. Women today are capable of leading and shaping their own development and that of their communities. Moving from women development to women-led development signifies a crucial change in perspective. And as our Honorable Prime Minister Modi ji has also said, women have to be seen not just as homemakers but also as nation builders. Especially giving women entrepreneurship a leg up could create more than 30 million women-owned enterprises, potentially creating 150 to 170 million jobs and contributing significantly to the GDP that Sir was just talking about. But sadly, at the current pace, full gender equality may not be realized until 2158 globally, which is in fact 5 generations from now, according to the World Economic Forum. Even today, more than 50% of Indian artisans are women, but only 22% of MSMEs are women-owned, according to the Economic Survey 2025. While India has a high percentage of women enrolled in STEM fields, their representation in STEM jobs and leadership positions is significantly lower. Globally, only around 5% of leadership positions in tech are held by women, and approximately only around 5% of tech startups are owned by women. And only 11% of executive positions are occupied by women in Fortune 500 companies. In fact, in March this year, we held a roundtable on the sidelines of our annual Women's Summit, which was attended by women representatives from several countries. And the entire theme of the summit was around accelerating action for a gender equal world. And what we realized that women across the globe face the same problems. Amongst the recommendations that came forward, which we brought forward as a white paper, was that most importantly, there's a need to invest in creating an enabling ecosystem for women entrepreneurs who are job creators of the future. Our government has announced several schemes for financing and skilling of women entrepreneurs, but it is very critical that women are made aware of these policies and have access to finance markets, networks, and mentorship programs. Being a woman entrepreneur myself, I have experienced firsthand the lack of awareness of various policies, incentives, and schemes for women, which led me to start sheatwork.com, a knowledge hub for women entrepreneurs. At BRICS Chamber also, we have been running a global women leadership mentoring program with participants, both mentors and mentees from across the world, to help develop global linkages and networks. Most of the women in our Women's Day Roundtable were also of the opinion that there is a need of a greater involvement of men in programs aimed at empowering women, as they are needed to help create a support system for women which will enable them to balance their caregiving responsibilities with their professional efforts. Now coming to the media plays a crucial role in empowering women, especially entrepreneurs, by providing a platform to showcase their businesses and build their personal brands. Media platforms can also highlight government incentives and policies as well as showcase success stories of inspirational role models so that other women are also encouraged to take the lead. Sharing success stories through newer media formats like podcasts is also needed, and we at BRICS have also started something called She Diaries, a podcast for women entrepreneurs, because we feel more and more women role models and voices should come through.
Most importantly, we need to move beyond politics and economics and make gender a part of mainstream media discourse round the year and not just around Women's Day. We must acknowledge that the journey towards true gender equality is far from over. We cannot become a $30 trillion economy by 2047 if we do not have at least 45% contribution from the country's women workforce. As women achieve power, the barriers will fall. As society sees what women can do, and as we women can see what other women can do, there will be more women out there putting in their best, and we will all be better off for it. As the famous Egyptian feminist writer Nawal el-Saadawi said, women are half the society. You cannot have a revolution without women. You cannot have democracy without women. You cannot have equality without women. You cannot have anything without women. Thank you. Thank you for inviting me. Very well said. I'm waiting to have a chat with you this afternoon. And one of the beauties was we're not looking at women development, but we're looking at women-led development. Golden words there. Thank you so much for that. With this, we would like to now invite on stage Mr. Aman Gupta to kindly say a few words, please. Let's have a huge round of applause. Hi, thank you for calling me here. I actually didn't know that I had to speak something, so I've not prepared anything. But I'll just say a few words. I come from a very young startup world, right? India is a very young nation, and as startups are emerging in the country now, our Honorable Prime Minister has also said that startups will play a very important role in Viksit Bharat 2047. I remember 6 years back when I had started, 7 years back both. So entrepreneurship and startup world was not a very common word, right? People were not entering businesses. There was a negative sentiment around doing business. If you were doing business, people used to say you must be a thief or ye kuch fraud karta hoga. But look at it today. People were, from 6 years back, people were looking at government jobs or MNC jobs. And today, I'm so happy that the youth of the country is now looking at entrepreneurship as a very important sector which they can join or start something of their own. So good times for India. Let's wish India becomes Viksit Bharat by 2047. And I hope we all play a very small and important role in that. Thank you so much, guys. Thank you so much, Mr. Gupta. We would now like to invite Mr. Prithviraj Harichandan to kindly say a few words, sir. Let's have a huge round of applause for him, Honorable Minister of Law, Works and Excise. The voice conclave of ideas जो कॉन्सेप्ट रे आरंभ होईची मु निश्चित भाव में बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए मोर बंधु मोर छात्र राजनीति समय बंधु एवं भास्कर दैनिक भास्कर ग्रुप रो चेयरमैन एबे श्री मधु महांती को जेते बेले आमे आगु को चलिबा आरंभ करिचे विकसित भारत विकसित ओडिशार स्वप्न परिकल्पना को लेकिन जिते बड़े आम चलवा आरंभ करिचे सही समय रे ओडिशार विभिन्न अग्रणी संगठन गुड़िक संस्था गुड़िक विभिन्न विषय को लेकिन ओडिशा केवल शिल्पायन हेले ओडिशा विकसित हो जीवनी केवल निजुक्ति बढ़ीगले ओडिशा विकसित हो जीवनी केवल कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन हो गले ओडिशा विकसित हो जीवनी विकसित हवा को हेले गोटे देश किंबा गोटे राज्य जो भली भाव में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट दरकार अच्छी से भली एक विकासर मानचित्र को जनमानस को आनिबा पई विभिन्न भाव में चर्चा आलोचना माध्यम रे से कथा को प्रस्फुटित करैबा पई एवं विशेष करके सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची देशर
विभिन्न अंचल होतिबा बेस्ट प्रैक्टिस मानंकु विभिन्न क्षेत्र में होतिबा बेस्ट प्रैक्टिस मानंकु एका संगरे आनिकी समाहार करिबा पई ए जो आवश्यकता से आवश्यकता को एई भली कॉन्क्लेव माने एई भली आलोचना चक्र मानंकरे से कथार गोटे रास्ता तैयारी होबार निश्चित भाव एक संभावना सृष्टि हुए। मु तो अनुरोध करी कौस्तुभ बाबू आ तांकर समस्त सहयोगी बंधु मानंकु आजिर आलोचना चक्र रे होतिबा प्रतिटी बिंदु को आपण माने दया करी एक डॉक्यूमेंट हिसाब रे ताकू तैयारी करंतु एवं आपण मानक परामर्श भाव रे ताकू आपण राज्य सरकार को से कथा को प्रेजेंट करांतु जे एई ढंगरे विकासर एक चित्र आमर कॉन्क्लेव को आसीथिबा विभिन्न अतिथि वक्ता मानंकर से तांकर जो परामर्श से माने देइचंती से परामर्श को समाहार करिकि आमे दौचु आपण माने एहा उपरे आपणकर नीति निर्धारण करंतु बोली। बंधुगण गोटे क्रेडिबल आउ आइडियल मीडिया सबु बेले साधारण गोटे नागरिकर आखि आउ कान कहले अत्युक्ति हब ना केवल सेतिकी नुहे असुविधारे पड़िथिबा गोटे लोकर स्वर मध्य तेणुकर से कथा को मीडिया आज जो भली भाव में बेले बेले जमिति आमर समाज अनेक समय अपसंस्कृतिर बशवर्ती होउची मीडियार जेतिकी ग्रोथ होउची जेतिकी एक्सपेंशन होउची जेतिकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होउची अनेक समय रे सेथिरे भी किछि किछि अपसंस्कृतिर स्वर उठिबा आरंभ होउची। सेही दृष्टिकोण रु जो माने क्रेडिबल मीडिया जो माने ये वृत्ति को गोटे होलिस्टिक आधार रे देखिबा आरंभ करिसंती एवं आरंभ करिसंती मोर सेमानंकु अंतत एतिकी अनुरोध जे ये जो सबुठु एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ गणतंत्र आकु तापाई गोटे निजस्व रास्ता तैयारी हो जो रास्ता देकी चलिले आगामी दिनर जो विकासर कथा आमे कहूचे से विकास रे तांकर गोटे नूतन एवं स्वतंत्र अंगीकारबद्धता रही परिबो। अनेक समय रे मोर तो सबुठु फेवराइट प्रोग्राम टेलीविजन रे व्यक्तिगत भाव रे तो मो व्यक्तिगत मत हो पारे जो भली प्रोग्राम गुड़िक विभिन्न समय रे आसे जे आपणक सहित आमे अच्छु गोटे डिस्ट्रेस्ड लोक जने डेस्टिट्यूट सहित आमे ठिया हेचु ए जो आश्योरेंस जेते बेले जने मीडिया हाउस दिए तार गोटे प्रोग्राम हुए से भली प्रोग्राम से धरणर प्रोग्राम गुड़िक मोर सबुठु इच्छा थिबा एवं सबुठु देखिबा पाई अधिक इच्छा थिबा प्रोग्राम जदि कोटा कहा जाए मते पचरा जाए मु कहबी से भली प्रोग्राम गुड़िक होची वास्तव रे सबुठु अत्यंत आदरणीय कार्यक्रम से गुड़िक तार एकमात्र कारण होची जहार साहा नहीं सरकारी बाबू माने अनेक समय रे कौन सी नेगेटिव जिनस देखा चाहती से तल स्तर रे हुंतु कि ऊपर स्तर रे कार्य करथिबा कर्मचारी माने हुंतु अनेक समय राजनेता मानक आखिरु भी अनेक जिनस देखा पड़े नहीं किंतु जेतेबेले ए जो माइक्रोस्कोपिकली ए कथा गुड़िक देखिबा पाई मीडिया जेतेबेले गोटे भूमिका निए अत्यंत दुस्थिति रे थिबा गोटे लोकर तार समस्या बाबद रे चर्चा करने को आलोचना करने को जेतेबेले मीडिया गोटे भूमिका निए सी भूमिका नेला बेलू निश्चित भाव से कथा लोकलोचन को आसे से कथा एडमिनिस्ट्रेशन नजर को आसे से कथा गवर्नमेंट नजर को भी आसे एवं तार समस्यार समाधान हवा पाई गोटे रास्ता खोले यही भाया अनेक उदाहरण अच्छी मु भावुची जो जो जगार मीडियार इंटरवेंशन होइए कथा गुड़िक से समस्त कथारे साधारण भाव रे लोकंकर समस्यार समाधान होइछि एवं सेतिरे मीडियार गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका भी रही तेणुकरी
सेई दृष्टिकोण जेतेबेले संवादटीए परिवेषण होउची तार यथार्थता केते एवं समाज केवल संवाद सेक्रे संवाद नुहे समाज को तैयारी करैबा पई राष्ट्र को विकास रास्ता रे चलैबा पई से संवादर भूमिका कौन हबो सी निश्चित भाव में एक चर्चित विषय हबार आवश्यकता अच्छी मु गोटे छोटिया कथाटे कहवाक चाहिए डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को बाबद कटकर जड़े बहुत सीनियर एडवोकेट मते बहुत दिन तले एक कथा कही मुझे सांगे भावुँ शेयर करवा ठीक हम से सीनियर एडवोकेट जनक तांकर छात्रावस्था से माने गोटे भल कार्यक्रम टे कोटी अनुष्ठित करैथिले कार्यक्रम कौन थिला मोर मने नहीं एते कथा से कार्यक्रम किंतु परदिन खबर कागज पृष्ठारे आसिलानी से माने जो छात्र नेता माने जो माने आज विभिन्न वृत्ति थिले से एडवोकेट महोदय नेतृत्व से माने जाइकी ता परदिन महताब बाबू को देखा हेले प्रजातंत्र ऑफिस रे तांको कहले सार आम एते भल कार्यक्रम कलु किंतु प्रजातंत्र रे आसिलानी छपा हेलानी प्रजातंत्र रे महताब बाबू डाकिले सेतेबेले संपादक थांती स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक महताब बाबू तांको डाकिले पाखकू एवं तांकर जो चिराचरित स्वभाव रे जेमती से कथा कहती सेमिति डाकिकी तांको कहले ओ जानकी पिला गुड़िए भल काम करिसंती तमे तांको खबरटी छपेइलनी खबर कागज मगेकी गोटे गोटे न्यूज को देखेले कहले एतिरे जहाँ सब न्यूज अच्छी ये सब गुड़िक होची विसंवाद और दुसंवाद संवाद कहीं एतिरे तेणुक मुझे आपण मान आगे कथा अवतारणा कली तर कोठी ना कोठी आमे समाज को तैयारी करिवार जो प्रक्रिया से प्रक्रिया भीतर को जीवा किछि दिन तले कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज रो गोटे कॉन्क्लेव होतला मते से गोटे कथा खराब लगिला जे गण इलेक्ट्रॉनिक गणमाध्यम समस्ते से कथा को जेते बेले से माने ताकू टेलीकास्ट कले सही समय मुद्रित गणमाध्यम रे गोटे भी न्यूज आसिलानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री किसी गोटे एभलिया गोटे विराट कार्यक्रम करछि बोली मते लगिला कोठी ना कोठी ब्रेकिंग न्यूज रो कंपटीशन एक कथा कोठी ना कोठी लुचि गला ओडिसा रो विकास पई से कार्यक्रम रे आसीथिबा समस्त अतिथिंकर जो विभिन्न प्रकार डेलिवरेशन थिला ताकू कोठी ना कोठी छपिबार आवश्यकता थिला ओडिसार लोक माने भी जानिबार आवश्यकता थिला से बाबद रे यस तेणुकरी से बाबद रे कोठी ना कोठी आमे ताकू गोटे ठीक रास्ता रे चलेबार जो प्रक्रिया ये प्रक्रिया को निश्चित भाव में आम समस्त ये गोटे चैलेंज एवं जेतेबेले आमे आलोचना करुचे विभिन्न आइडियार कथा आज जेतेबेले अनेक समय एक कथा भी देखा जाउची जे जुडिशियरी आ एग्जीक्यूटिव भितर अनेक समय एक सामान्य द्वंद्व कोठी ना कोठी उपजुची से समय रे गणतंत्रर स्तंभ यही स्तंभटी निश्चित भाव में एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करने दरकार ये भाया समस्या आगामी दिन में न हो बोली तेणुक ये सब कथा को लेकिन अनेक गुड़िए चर्चा आलोचना तो आपण विभिन्न पैनल रे हब मु पुणी थरे अनुरोध करी जे आपण माने जहाँ भी आज आलोचना होची ताकू तार डॉक्यूमेंटेशन करांतु एवं एक मुद्रित डॉक्यूमेंट भाव में आपण सरकार को से बाबद में परामर्श दिंतु एतिक अनुरोध करी मो कथा शेष करी जहाँ फल आम आगामी दिन में विकसित ओडिशा विकसित भारतर जो परियोजना आरंभ करुचे से सहायक हम धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, now it's time to felicitate few eminent personalities of the state who have contributed immensely to the growth of the state. First, we have Mr. Tara Ranjan Patnaik. Can we please have an AV, please? Tara Patnaik, from trawler to tycoon, the visionary who put India on the world seafood map. It is with great pride that we present the Lifetime Achievement Award to Shri Tara Ranjan Patnaik,
the founder of Falcon Marine Exports Private Limited, India's largest integrated seafood exporter. From humble beginnings, Sri Tara Patnaik built a multi-crore empire, elevating Odisha's global stature in the seafood industry. His entrepreneurial spirit is matched by his commitment to social responsibility. Falcon Group, under the leadership of Tara Ranjan Patnaik, has diversified beyond seafood exports into multiple sectors. Falcon Real Estate develops premium residential and commercial projects across Odisha, while Falcon Automobiles manages vehicle dealerships and services. Falcon overseas strengthens international trade and logistics, and Falcon Aqua India supports. Congratulations to Sri Tara Ranjan Patnaik for his exceptional contributions to both business and society. Let's have a huge round of applause. We would now like to invite Mr. Anjan Mohanty of Falcon Group to please come and collect Lifetime Achievement Award on behalf of Mr. Tara Ranjan Patnaik. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. We would now like to request Srimati Surma Padi, Honorable Speaker, to kindly present the award. Congratulations. मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी श्री अनिरुद्ध आचार्य जी को कि प्लीज़ हमारे साथ मंच पे आएं और हमारे साथ अवार्ड्स देने में सहायता करें. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. Next we have Shri Pankaj Lochan Mohanty, Chairman MGM Group. May we please have the AV? Mr. Pankaj Lochan Mohanty is a visionary industrialist, respected sports administrator and passionate philanthropist. As the chairman of MGM Minerals Limited, he has played a key role in driving sustainable growth in the mining and mineral sector, setting high standards in corporate governance, environmental responsibility and innovation. As the president of the Odisha Cricket Association, he has been instrumental in elevating the state's cricketing infrastructure, nurturing young talent and promoting a sports culture that extends from grassroots to international levels. He established Wild Lotus Fashions, a state-of-the-art modern ready-made garment manufacturing unit in the state, which employs about 1,200 workers, out of which 900 are women. He has established MGM School of Sports, a center of excellence for cricket, and has tied up with Coaching Beyond, founded by Shri Ravi Shastri, Shri B. Arun and Shri R. Sridhar, former Team India coaches, to provide advanced cricket coaching to aspiring cricketers of the state with an investment of 100 crores. This will be one of its kind cricket academy of our country. A true believer in inclusive growth, Mr. Mohanty continues to inspire with his multifaceted contributions. जोरदार तालियां हो जाए श्री पंकज लोचन मोहंती के लिए. अब मैं दरख्वास्त करूंगी श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी कि प्लीज उन्हें अवार्ड दीजिए. जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू. Congratulations once again. Next person to win the award is Shri Mitesh Khimji. Can we please have the AV? He's the founder of Khimji Jewellers. Mitesh Khimji, the golden heart behind the gold legacy, rooted in Odisha, committed to change. A visionary businessman, a compassionate philanthropist, and a proud son of Odisha,
Mitesh Khimji is the director of Khimji Jewelers, a brand that has become a symbol of trust, elegance and heritage for generations of Odias. Since taking the lead in 1999, he has shaped the brand with a strong focus on quality, trust and innovation, making it a household name across Odisha. Beyond business, his heart beats for social impact. The Khimji Group has been a consistent contributor to philanthropic causes. He has led several initiatives in education, healthcare, women empowerment and rural development. From helping young students pursue their dreams to supporting health camps, his work is touching countless lives across Odisha. Through his dedication to social good and business excellence, Mitesh Khimji continues to be a driving force in Odisha's journey towards inclusive growth and lasting change. Heartiest congratulations. We would now like to request Srimati Surma Padiji to kindly present the award. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for Shri Mitesh Khimji ji. Heartiest congratulations. Very well deserved. Next we have another award winner, Dr. Prabodh Mohanty, MD S&M Group. Ladies and gentlemen, let's have the AV please. Dr. Prabodh Mohanty is a prominent industrialist and leader in Odisha, currently serving as the president of the Utkal Chamber of Commerce and Industry Limited or UCCIL. As the managing director of S&M Group, Dr. Mohanty oversees a diversified conglomerate with interests in spanning mining, hospitality, manufacturing, power production and green energy. The group is also committed to corporate social responsibility initiatives in education and healthcare. Mr. Surendranath Mohanty, father of Dr. Prabodh Mohanty, was principled and visionary individual, admired for his humility and strong moral values. His legacy lives on as Dr. Prabodh Mohanty and his two brothers, Pradipta Mohanty and Pragati Mohanty, now collaboratively grow their family business with dedication and unity. Dr. Prabodh has made several key contributions to the development of Odisha. His leadership in both business and social sectors positions him as influential figure in Odisha's ongoing transformation. Let's have a huge round of applause. We would now like to request Shri Anirudh Acharya ji to kindly present him with the award. Our next award goes to Shri Gaurav Kumar. Can we have the AV please for KCCL? Dr. Soumyaranjan Samal is a distinguished entrepreneur and industrial leader, serving as the chairman and managing director of Kalinga Commercial Corporation Limited, KCCL, a leading name in India's mining, logistics and infrastructure sectors. Under his visionary leadership, KCCL has evolved into a symbol of operational excellence, innovation and sustainable growth. Beyond business, Dr. Samal is a strong advocate for social development in Odisha. Through various CSR initiatives, he has supported education, healthcare, skill development and rural infrastructure. He has played a crucial role in generating large-scale employment, empowering local communities and enhancing Odisha's presence on the national industrial map.
heartiest congratulations to Soumya Ranjan Samal, Chairman cum MD KCCL. We would now like to request Gaurav Kumar to collect the award on the behalf. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. We would now like to request Shri Prithviraj Harichandan to kindly do the honors. Thank you. Congratulations to all the winners. We would now like to request Tilak Raj Mohanty to facilitate all the dignitaries on behalf of Odisha Bhaskar Live. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for our dignitaries. जी We would like to thank all the dignitaries once again for joining us and gracing us with their presence. We would now like to request Srimati Surma Padiji, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, to kindly address us with her, to kindly address the gathering. Please, ma'am, please say a few words for us. Please be seated. Thank you so much, Anirudh Acharya ji. We'll be calling you back soon.
जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ओडिशा भास्कर तरफ आयोजित होता आज द वॉइस कॉन्क्लेव ऑफ आइडियाज एभली एक सेमिनार रे एठी मंच रे उपस्थित अछंती राज्यर मानवर आईन पूर्त एवं एक्साइज मंत्री श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन जी उपस्थित अछंती सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव जी महिला एंटरप्रेन्योर हिसाब रे तथा विनिर्माण क्षेत्र रे शीर्षता आनी पारिथिबा भौणी रूबी सिन्हा जी उपस्थित अछंती नालकोर पूर्वतन सीएमडी तपन जी एवं मिस्टर महांती तिलकराज महांती जे कि डिजिटल कम्युनिकेशन रो जने पायोनियर कहले अत्युक्ति हेब नाही। सर्वोपरि राहुल जी अमन जी यस अमन जी यंग एंटरप्रेन्योर बहुत बढ़िया कथा आप कही। आई विल कोट योर लैंग्वेजेस हियर ओवर हियर। तो ये सम्मानास्पद मंच तथा ये कार्यक्रम आयोजक श्री कौस्तुभ दास जी एडिटर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ओडिशा भास्कर फाउंडर मेंबर ओडिशा भास्कर तथा आज जे ए मीडिया हाउस को गतिशील कराउछंती श्रीयुक्त मधुसूदन महांती महाशय भास्कर समस्त टीम सदस्य वृंद एवं मोर बड़ भाई तथा ओडिशा सांबादिकता क्षेत्र में दीर्घ दिन धरिक जी तांकर योगदान देइछंती अवदान दे आछंती श्रीयुक्त प्रदोष पट्टनायक महाशय एठी उपस्थित थिबा अन्यान्य समस्त डिग्निटरीज सहित श्री स्पिरिचुअल लीडर श्री अनिरुद्धाचार्य जी समस्त को मु सम्मान प्रदर्शन पूर्वक आपण मान को समस्त को स्वागत करुछि जो माने आज कॉन्क्लेव को समृद्ध करने आसीचंती दोज हु आर पॉलिसी मेकर्स इंडस्ट्री लीडर्स एकेडमिशियंस थॉट लीडर्स ये माने आपण मान को समस्त को जो माने कि आपण एक्रॉस द स्टेट जो माने कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हेल्थ एजुकेशन मीडिया एवं स्पिरिचुअलिटी क्षेत्र में किभली ओडिशा तार उत्कर्षता प्राप्त करिबो सेथिपई आपण मानकर निजस्व मतामत को एठी उपस्थापन करबा पई आछंती मोहि भली समस्त को आपण मान को मु निश्चित भाव में स्वागत करी। आमे समस्त जानिचे भाषा आधार रे ओडिशा राज्य 1936 मसीह गठित होइथिला एवं सेथिपई जो माने निजर कर्तव्य कर्म करि जाइछंती ओडिया जातीयता भाव ओडिया जाति ओडिशार समृद्ध भाषा को लेकिरी ओडिशार सर्वपुरातन विश्वर सर्वपुरातन संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति को लेकिरी भिन्न भिन्न स्थान रे ओडिया मानन को एकत्रित करी स्वाधीनतार बहु पूर्वर पराधीन भारतवर्ष रे एक भाषा आधारित राज्य गठन करिबारे जो मानकर बहुत योगदान रहितला मु आज ए दिन रे जेतेबेले ओडिशार विकास कथा को लेकिरी आमे एठारे बहु लोकंकर स्वर को समूहंकर स्वर को गोटे स्वर रे रूप देवा पई जो योजना करिसेंती भास्कर मीडिया हाउस एभली अवसर रे मु निश्चित भाव में आमको जे आम राज्य देइछंती से दिवंगत मान पाखरे मु नतमस्तक हेबी से मानकर जीवन आदर्श आम पई प्रेरणादायी रहू एवं ओडिशार जड़े ओडिया हिसाब रे आमे ओडिशा नुहे वी आर नॉट ओरियंस आमे होचे ओडिशा राज्यर ओडिया माने आमे निश्चित भाव में निजको गर्वित अनुभव करिबा। ओडिशा एभली एक राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण जदि आमे देखिबा अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में ओडिशार पदचिन्ह को जदि आमे मने पकेइबा ताहले ये एक संभावनार प्रदेश ये संभावनार
उत्खनन बोधहुए ए संभावनार परिसीमा मापिबा बोधहुए आउरी अनेक आगरू होई पारि थांता किछि परिमाण रे जहाँ आज ओडिशा को आमे चिन्हिछे बा चिन्हई पारिछे ताठारु बहु अधिक से जमी जल जंगल जनसंपदर कथा हेउ सुविस्तीर्ण बेलाभूमिर कथा हेउ विस्तीर्ण पर्यटन स्थली मानकर जहाँकि विश्वर लोक मानक आकृष्ट करिवार दक्षता रखिछि। छोटिया उदाहरणटे देवी जेतेबेले विदेशी पर्यटकटी आसे कोणार्क मंदिरर निखुण कलाकृति को जेतेबेले देखे एवं जेतेबेले नर्तकीर शरीर भितरे जो आम शरीर जे भली अस्थि मज्जा अच्छी अस्थि अच्छी से अस्थि रहिबा भली जो स्थानटीए तार नर्तकीर मूर्ति रे अच्छे रही जेतेबेले ताको देखे भंगा मूर्तिटी को से आश्चर्यचकित हुए। जेतेबेले कोणार्कर जो कीर्ति कोणार्क मंदिर रे निर्मित कीर्तिराजी को देखी गोटे पटरे आश्चर्यचकित होगा बेले गोटे पटरे आमर स्वर्णकार रूपाकार मानकर सिल्वर फिलिग्री वर्क जहाँकि आज विश्व को मध्य अनेकांशरे आकृष्ट करे से आज मध्य आमर से कृति को उदाहरण रूपे नबा बा ताकू निजे निजे ताहा पुणी निर्माण करने ए क्षेत्र में अनेक सफलता एपर्यंत पाई नाहंती। से आमर वस्त्र संभार कथा हो ए समस्त कथा को देखा गले ओडिशा एभली एक संभावनार राज्य। आउ जेतेबेले आमे मानव संबलर कथा चिंता करुछे पर्याप्त मानव संबल आज कलाहांडीर भोकिला छुआर नंगला पुंगुला देह देखैबार अवकाश नहीं। कलाहांडी आज भात हांडी स्वर्ण खणी रे भरपूर एवं स्वर्ण अभ्र ठारू आरंभ करी बक्साइट मैंगानीज ठारू आरंभ करी भिन्न भिन्न खनिज संपद रे भरपूर थिबा राज्य ओडिशा। जंगल संपद आज मध्य इको टूरिज्म क्षेत्र को प्रभावित करि परिबा भली इको टूरिज्म सेक्टर रे साधारण लोकों को आकर्षित करि परिबा भली संभावना रहिथिबा राज्य होची ओडिशा। सर्वोपरि आमर मानव संबलर कथा जेतेबेले विचार को निया जाए सेथिरे निश्चित भाव में आमर युवा शक्तिर प्रभाव आमर मातृशक्तिर प्रभाव 50% ऊर्ध्व महिला शक्ति जो मानकर समयर उपयोग एवं ताहार वास्तविक अर्थनैतिक रूपायन करने जेतेबेले चेष्टा करा जाइछि सेतेबेले निश्चित करा जिवो सेतेबेले निश्चित भाव में ओडिशा राज्यर अर्थनैतिक स्थितिर निश्चित भाव में समृद्धि आसिबो। आउ जो मु युवा संबलर कथा कहूली आमे जदि देखिबा आज विश्वर कोण अनुकोण रे विश्वर कोण अनुकोण रे जेउठी ना केउठी जणे युवक बयस रे राज्य छाड़ी बा देश छाड़ी बाहर शिक्षा दीक्षा लाभ पर बाहर कर्तव्य कर्म करने को जाइथिया ओडियाटीए से निजर उत्कर्षता सेठी प्रतिस्थापित करि पारिछि कोणर अणुकोण रे विश्वर से तांकर दक्षता को प्रतिपादन करि पारिछंती। तो एभली एक शक्ति संपन्न ओडिशा राज्य मु तो कहबी ओडिशा इज अ लैंड ऑफ latent opportunities and our youth talent pool is especially unique and needs to be given a renewed life. आज दिन रे आमे जदि चिंता करूछे मु ओडिशा भास्कर को एथिपाई धन्यवाद देवी जे से माने एभली एक कार्यक्रम को करिवा माध्यम रे आयोजन करिवा माध्यम रे से माने जे संवाद परिवेषण संवादर गणमाध्यमर दायित्व केवल संवाद परिवेषण एवं सेतिकी भितरे निजको सीमित न रखी पुणी विकासर पथरे से माने किभली भाबरे आउ सहयोगी हेई पारिबे सेथिपाई एक बड़ चिंताधारा नैछंती एवं सेही परिप्रेक्षी मु कहिबी आज सारा भारत वर्ष रे जो भारत बाहरे विश्व पटल रे जो युवा शक्ति अछंती से युवा शक्ति माने से मानकर भितरे मध्य गोटे चेंजेस आसीछि। आज जातीयता भाव हो बा विश्व को नेतृत्व नेवा भली दक्षता भारतवर्षर आसी सारिबा परे भारतर नेतृत्व आमर देशर प्रिय प्रधानमंत्री विश्व नेतृत्वर
विश्व नेतृत्व रूपे निज परिचय सृष्टि करने सहित विश्व अर्थनीति रे भारत को आगको नेबापाई भारतर स्थिति को मजबूत करने भिन्न भिन्न योजना मान प्रणयन करुवा बेले आज विश्व स्तर रे वैश्विक स्तर रे थिबा आमर एंटरप्रेन्योर माने आमर युव उद्योगी माने आमर भिन्न क्षेत्र रे काम करुवा विभिन्न क्षेत्र रे काम करुवा युव वर्ग से माने मध्य भारत को फेरिबा ओडिशा को फेरिबा एभली एक स्वप्न को से माने मध्य निज भितरे गुंथिबार आरंभ कलेनी एवं सेही मानक आधार रे ही आमे जो आशा रखीचे पूर्ण विकसित भारतवर्षर पूर्ण विकास ओडिशार ताहा निश्चित भाव में संभव हेबो। एठी कहूथिले समस्तंकर प्रयास मानवर मंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री एठी कहूथिले जे शासनर मूल मंत्र रूपे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास वास्तविक एथिपाई निश्चित भाव में विकास करने को हेले भारतवर्षर समस्तंकर सहयोग आवश्यक समस्तंकर जोग संजोगर आवश्यक एवं आज आम राज्य रे शिक्षा रे आम राज्य मध्य शिक्षा क्षेत्र रे एक अग्रणी राज्य रूपे परिचित हो सारी आमे जदि भारतवर्षर पूर्वांचलर कथा को देखा पूर्व भागर कथा को देखा ताहले निश्चित भाव में पूर्व भागरे ओडिशार एक स्वतंत्र स्थान रही शिक्षा दीक्षा रे हो नुआ टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटीज कथा हो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज कथा हो कि नूतन टेक्नोलोजी को की दक्षता विकास माध्यम रे नूतन टेक्नोलोजी को एक्सेप्ट करवा एवं तार किभली भाव में तार प्रयोग करवा से आज पिला मानक मन रे आग्रह सृष्टि होती तेणु ये संभावनार प्रदेश भारतवर्ष विकसित इंडिया विजन 2047 रे भितरे ही ओडिशा विकास 2036 कथा रही एवं से क्षेत्र में ओडिशार विकास हवा को हेले आमको निश्चित भाव में समस्तंक स्वर को ओडिशा को चिन्हिबा ओडिशा को जानिबा एवं तत्सहित समस्तंकर उद्यम रहिबा दरकार समाजर उद्यम रहिबा दरकार जे आमे समस्ते एक स्वर रे सही भली ओडिशार विकास कथा कहवा एवं ओडिशार विकास कथा कहवा को गले आमे जदि देखिबा ताहले वर्तमान ओडिशा सरकार से मध्य बहुत गुड़े कथा चिंता करछंती। आज आमे कहूथिले एठी अमन बाबू एठी कहूथिले जे से जेते बेले प्रथमे स्टार्टअप कथा कहले आज से पहले 7-8 साल पहले आपने जब स्टार्टअप के बारे में चर्चा की या स्टार्टअप पर आप उतरे हुए थे तब लोगों में स्टार्टअप और इसके बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड था। बच्चा कुछ कर नहीं पाया इसलिए शायद बिजनेस में आ गया है, ऐसा ही होता था। हम पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा आग्रह नहीं करते थे कि आप इसमें जाओ, लेकिन आज क्या है, आज उड़ीसा में स्टार्टअप इनिशिएटिव्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इंडिया ऑल इंडिया सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो स्टार्टअप्स के बारे में एक बढ़िया पिक्चर है, ग्लोरियस पिक्चर है कि यस आवर यूथ कैन सक्सेस। सो इसके सही भली मु कहूली ओडिशा गवर्नमेंट वर्तमान स्टार्टअप ओडिशार कथा को नहीं निकटरे उत्कर्ष ओडिशार जो कार्यधारा होता जो भली भाव में अन्य अंचल व्यवसाय करुथिबा लोक माने ओडिशार संभावना को उत्खनन करिवे एवं ओडिशा रे निवेश करिवे एवं ओडिशार युव संबल ओडिशार मानव संबल मध्य विकास धारा रे अग्रगति लाभ करिवो। तेणु ओडिशा सरकार एथिपई पदक्षेप आरंभ कर सारिछंती। गोटे एंटरप्रेन्योर कंड्यूसिव एटमॉस्फियर तैयारी करिवा पई ओडिशा सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध अछंती। तेणु ए अवसर रे ओडिशा मध्य चीफ मिनिस्टर रिसेंटली डिक्लेयर करछंती। आपण माने जानिथिबे माननीय मोहन चरण माझी कहिछंती आमे जेतेबेले 2036 रे विकसित ओडिशार स्वप्न देखुचे, ओडिशार अर्थनैतिक विकास रो स्वप्न देखुचे, ओडिशार मानव संबलर पूर्ण विनियोग स्वप्न देखिचे, सेतेबेले से कहिछंती जे गोटे आमर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव नैछंती प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। से कहिछंती 36 for 36 कौन कहते 36 for 36 because we are going to achieve complete the 100 years in 2036 एवं सरकार
आज सरकार से चिंता करिछंचे जे 36 की सेक्टर को फॉर डेवलपमेंट विकास पई 36 की सेक्टर को चूज करछंती एवं से चिंता करछंती 2036 सुधा यही की सेक्टर गुड़ा करे जहाँ कि आमको डेवलपमेंट विकास आड़ को नहीं कि जीव एवं विकास शीर्ष में पहुँचाई पारिबो निश्चित भाव में ताकू आम माने फोकस करवा दरकार मुझे कहूली जे समस्तंकर स्वर को एक स्वर रे परिणत करने ओडिशा भास्कर रे जो प्रयास ये निश्चित भाव में ये सबुदिन पाई ये अवदान महान अवदान ये निश्चित भाव में सहयोगी हेब आमे जदि से भाव में मुख्यमंत्री जो 36 की स्टेप्स नहीं चिंता करिसेंती आमे जदि से विषय नहीं करी अधिक से भितर अनुशीलन सहित से क्षेत्र में निरंतर भाव में कारण गोटे कथा अच्छी आमे मु तो गोटे मोर बहुत बिटर एक्सपीरियंस कहबी मते कहीं खराब भावंतु बा भल भावंतु जे आमे एनजीओ सेक्टर हो किंबा विकास रे हाथ लगे भिन्न भिन्न संस्था अनुष्ठान मानकर कथा हो आमे जेतेबेले विगत दिन मानकर एक कथा देखी देखी आमे देखी देखी आसिलेनी जे विशेष करी मु कहबी जे प्रथमे जन जागरण सृष्टि अरे कार्यक्रम अंतिम लक्ष्य कौन अंतिम लक्ष्य होची जन जागरण सृष्टि करवा आमे केते जन जागरण सृष्टि करी चलिले पुणी तापरे गोटे पर्याय आसला से पर्याय रे आमे कौन ओडिशा अच्छी बा कौन संभावना अच्छी तार भिन्न भिन्न एनजीओ स्वेच्छासेवी अनुष्ठान माने ता संपर्क में संदर्भ लिखिले सरकार को अवगत करेले किंतु वर्तमान आमे जदि देखिबा ताले फोकस करिकिरी आजिर सरकार चाहूँगी ए बहुत हो गला जागरण जनजागरण संदर्भ वर्तमान आमे किछि ठोस कथा को नहीं करी जिबा एवं ता ऊपर फोकस करिबा जदि आमे फोकस करिबा ताहले निश्चित भाव में प्रिय मुख्यमंत्री स्वप्न रही जे आमे एभली 36 पॉइंट उपरे जदि आमे विचार करी ताकू नहीं करी आगु को जिबा ताहले ओडिशा निश्चित भाव में 2047 मसीह जो भारत विकसित भारत हेबापाई जाउछि ठीक सेतेबेले ओडिशा मध्य तार 5% ग्रोथ निश्चित भाव में भारत वर्षर पूर्ण जीडीपी को निश्चित भाव में 5% कंट्रीब्यूट करि पारिबो एभली एक महान स्वप्न अच्छी तेणु आज आपण मैंने ये जो कार्यक्रम करिसेंती मु समस्त को धन्यवाद देवा सहित मोर निजस्व गोटे दुईटी कथा आपण मानक पाखरे रखिबा को चाहूँगी देखंतु मु एठी उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी भिन्न भिन्न सेक्टर रे काम करुथिबा इंडस्ट्रियलिस्ट एकेडमिशियन स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स यंग यूथ मास समस्त को मु गोटे कथा कहबी जे आमे निश्चित भाव में गोटे क्रिटिकल लेंस रे आमे जदि निजे ओडिशा को बढ़ेबा पई चाहूचे बा निजस्व अभिवृद्धि चाहूचे निजस्व संस्था हो बा निजर व्यक्तिगत अभिवृद्धि हो बा आम राज्यर विकास कथा चिंता करुचे मु समस्त को अनुरोध करी जे आमे गोटे क्रिटिकल लेंस पुट ऑन करवा एवं आमे केतेटा जिनस को जो गुड़िक किछिटा इश्यूज को पॉइंट आउट करिवार आवश्यकता रही जोटा आमको निश्चित भाव में ए बड़ एक समस्या रूपे देखा देछि एवं से समस्या को आमे चूज कर से बहु समस्या रही आमे 5टी मात्र समस्या को निज जीवन रे आमे जदि सिलेक्ट करिबा हुए तो मु करि पारे हुए तो मु कहा द्वारा करई पारे किंबा हुए तो समाज रे कार्य को आमे संपादन करी समाज को विकास आड़ को नबा मु कहबी से भली 5टी समस्या को आमे फाइंड आउट करिबा से भली स्किल सेट एवं अपॉर्चुनिटी जदि अच्छी ताको संपादन करिवा पई ताहार मध्य किभली बा ताहार इकट्ठा करिबा एकाठी करिवार व्यवस्था मध्य आमे करिबा ताको आमे गोटे मिशन रूप रे नबा मिशन सीए जहाको अधा पंतरिया भावे छाड़ी दिया जाए नहीं जदि किछि लक्ष्य आमे नहीं करी जिबा एवं लक्ष्य को पूरण करिवा पई चेष्टा करिवा निहाती आवश्यक से भली किछि समस्या को नहीं एवं ताको समाधान करिवा पई जे भली उदाहरण साजिछन्ते हमर मुख्यमंत्री मु से भली समस्त को व्यक्तिगत जीवन रे सामाजिक जीवन रे एक कथा चिंता करिवा पई मु निश्चित भाव में अनुरोध करी आमे समस्ते जानिछे बूंद बूंद से सागर आमे एठी उपस्थित जेतिके अछन्ती एवं जो संभावनार जो विकास संभावना मु एठी उपस्थित थिबा व्यक्ति मानक पाखरे देखुची जदि आमे ताहाकू करिबा ताहले निश्चित भाव में आम
भारतवर्ष 2047 बेलू विकसित राष्ट्र परिणत होला बेले ओडिशा मध्य विकास धाड़ी रे बा भारतर विकास रे एक सर्वश्रेष्ठ योगदान अवदान ओडिशार निश्चित भाव में रही मुझे ये जो किछि समस्या छोटिया होता पारे बा ताहा बहुत बड़ होता पारे गोटे कि समस्या को मुझे आपण मान पाखे रखी आज कनक्लेव रे बोधे रोहित कापुर जी अच्छा जे स्विगर से तांकर आइडियाज निश्चित भाव में देवे मुझे जानी आज मुठाए खाद्य खूब कम समय भितर व्यस्त विव्रत जीवन में मुठाए खाद्य आसी पहुँचीज कि राशन सामग्री आसी पहुँचीज एवं ये गोटे समस्या किछि दिन तले थिला जो समस्या को संपूर्ण समाधान करिबारे ए समस्याटी जो रोहित कापुर भली लोकं को जते बेले स्पर्श करथिला एवं ता ऊपर जते से चिंता करथिले समस्याटा निश्चित भाव में गोटे साधारण समस्या भली लागि पारे किंतु ताहा कौन है आज 73,000 कोटी टंकार मार्केट कैपिटल को से रीच कर पारिछंती एवं स्विगी आज समस्तंकर ए गोटे छोटिया समस्या को अनेकांश समाधान करिवारे सफल हो पारि हुए तो खाद्य घर पाखे पहुँचेबा बा राशन सामग्री घर पाखे पहुँचेबा ये गोटे छोटिया समस्या भली लागू थाई पारे किंतु ए समस्या मध्य किभली एक विस्तीर्ण आउ अर्थनैतिक व्यवस्था व्यापार करा जाई पारे ताहा निश्चित भाव में आम मानक पई उदाहरणीय एभली अनेक कथा अछि मुझे रूबी भौणींकर कार्यर मध्य प्रशंसा करुछि से जो भली भाव में महिला माननकु नै करी आज एभली एक क्षेत्र को डेई पड़िछन्ति महिला माने मध्य एई भली क्षेत्र रे काम करबा आवश्यक निष्ठार केवल आवश्यकता रही तेणु मो शेष रे आज एठी उपस्थित थिबा मोर जो थॉट लीडर्स माननकु नैथिबा कनक्लेव रे समस्त को एकत्रित करथिबारु ओडिशा भास्कर को धन्यवाद देवा सहित पूर्वोदयर विकास पाई भारतवर्षर पूर्वोदयर विकास पाई ओडिशार विकास एकांत आवश्यक एवं भारतवर्षर विकास पाई निश्चित भाव में विकसित भारत पाई पूर्ण विकसित ओडिशार आवश्यकता रही तेणु आमे जणे जणे ओडिशा एक उत्तीर्ण समय वर्तमान ओडिशा रे उपस्थित अछि एथिपाई कहबी उत्तीर्ण समय जे एठी लीडरशिप ओपन माइंड रे अछंती विकास पाई सब किछि करा जाई पारे से भित्तिभूमिर विकास हो से कृषि क्षेत्रर विकास हो से मातृशक्तिर अर्थनैतिक प्रगतिर कथा हो से युव वर्गर विकास कथा हो स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप ओडिशा स्टार्ट करिवार कथा हो प्रत्येक क्षेत्र में आदिवासी गिरिजन समस्तंक पई किभली व्यापक अर्थर व्यवस्था करा जाई परिबो पर्यटन क्षेत्र शिल्पर विकास करा जाई परिबो ये समस्त कथा नहीं करी जेतेबेले चेष्टित अछंती उत्तीर्ण पदरे जेतेबेले ओडिशा रही आसंतु समस्ते निश्चित भाव में आमे उद्यम करिबा एवं पूर्ण विकास हब ओडिशार से समस्ते निज उपरे दायित्व नेबा एवं मु समस्त को कहबी आपण माने समस्ते गोटे पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स नियंतु पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स नियंतु निज उद्यम किछि करंतु आसंतु मिसिकी आम भल पाउथिबा ओडिशा को आम राज्य को विकास दिगरे पहुँचेबा पई समस्तंकर मिलित सामूहिक उद्यम करिबा एति कही मो बाणी को विराम देउछि वंदे मातरम वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। Thank you so much, Srimati Padiji. Ladies and gentlemen, with this, we come to an end of the inaugural session. We request all the guests to kindly be seated and join us for the rest of the conclave. Let's have a huge round of applause to all our dignitaries present.